Hello everyone, welcome to the anonymous NEET-PG mentor channel. I'm a guy from Delhi and I gave my NEET-PG 2021 and I secured an AIR of under 350. Then I started this channel anonymously to help my fellow NEET-PG aspirants. Today I'll be talking about how to revise anatomy and the important topics of anatomy. Anatomy basically, in my opinion, is a very important subject and it is the most important subject when it comes to first year. You can expect around 9 to 10 questions from anatomy, even more अगर एग्जामिनर को बहुत मन कर रहा होगा. Anatomy की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली लेंदी. सो टू टैकल इट, मेरे को ऐसा लगता है कि anatomy में स्मार्ट रिविजन करना बहुत ज़रूरी है. बाय स्मार्ट रिविजन आई मीन के यू शुड ऑलवेज डू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, no matter whatever chapters they are in. You should always go from important to non-important, because anatomy में repeats are very likely to come, and important topics, they make up 90% of the questions which are asked. So you should always go from the important topics, the previous year questions, and then to the non-important topics. You can only glance the non-important topics and काम हो जाएगा. So I think smart revision is very important. Anatomy की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलेगा. नोट्स ओनली मेक अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. देर आर मेनी अदर थिंग्स टू डू, लाइक इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है एनाटमी में, लाइन डायग्राम्स, कैडावर आइडेंटिफिकेशन आजकल आ गई है, एंड इवन ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी का मतलब है द अटैचमेंट्स विच आर आस्क्ड ऑन द बोन्स आजकल. सो इफ़ यू हैव रिवाइज एनाटमी मल्टीपल टाइम्स, आई वुड सजेस्ट, since you have done it multiple times, one full reading ज़रूर करना in December or January, and then you go to the previous year questions and the important topics. If you have read anatomy only once, I would suggest you go for the previous year questions and the important topics and read it at least twice or thrice. तो पूरा अच्छे से हो जाएगा. And if you haven't read anatomy even once, I would suggest please एक full reading तो complete कर लो as soon as possible, and then you go to the previous year questions and important topics. But one full reading is must. इतना तो important है ही ये subject. Now what I used to do to make my life easy was I used to study with diagrams. मैं anatomy में generally notes नहीं बनाता था, theory notes. I used to make diagrams and मैं उसी में ही सब add कर देता था. For example, अगर कोई मेरे से blood supply और scapula पूछता है, तो I have not read the theory per se. I have just made this diagram, and in the diagram I've made all the arteries. So I know कि this is the acromion, this is the scapula, एंड यहाँ से सब क्लेवियन की एक ब्रांच आएगी, यहाँ से आपकी एक्रोमियल ब्रांचेस आएंगी. सो इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आई जस्ट मीन के बाय डायग्राम्स यू कैन concise a lot of theory in one diagram and revise it very quickly. So use that. And if you want to know from where I did it from Ashwini sir's app. He's the best teacher for anatomy and you can look into him. When I used to do anatomy, I used to divide it into 3 groups, and ये थोड़े से मीनिंगफुल तरीके से डिवाइडेड है. ग्रुप 1 यूज टू कंटेन द चैप्टर्स जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं. तो इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज यू कैन स्टडी दैम वर्ड बाय वर्ड एंड यू कैन रिवाइज एवरीथिंग एंड क्वेश्चंस भी आएंगे. सो दिस इंक्लूडेड हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटमी एंड अपर लिम. इसको वर्ड बाय वर्ड याद करना है बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट एंड इससे भर के क्वेश्चंस आएंगे. सो जस्ट प्लीज़ गिव टाइम टू दीज 3 टॉपिक्स. Group 2 included topics which were very scoring. So this contained general, embryo and histology. The best part about group 2 is कि इससे question तो आना ही आना है, कोई skip तो कर नहीं सकता इसको, and इससे आएंगे सिर्फ maximum 1 to 2 questions from each. And ये बहुत छोटे छोटे topics हैं. So if you cover these and if you don't leave these, आपके around 3 to 4 questions तो पक्के सही हो ही जाएंगे. So what people tend to do is they tend to leave these 3 things, and that is a big mistake what they do. You are just leaving 3 to 4 questions जो बहुत कम मेहनत करके करेक्ट हो जाएंगे. So these 2 groups are very important. Then your group 3 comes. These are the topics जो बहुत लेंदी भी हैं and बहुत कम भी पूछा जाता है. So इसको आप important topic से रिवाइज कर सकते हो, no problem. Back तो I never used to revise. मेरे को नहीं पता back में क्या है. I used to leave it. So how I used to revise anatomy is I used to divide it in 5 days. Day 1 I used to study head and neck completely. Day 2 I used to study neuroanatomy completely. And day 3 I used to study the limbs, that is the upper limb and the lower limb. Day 4 I used to give for the scoring subjects, scoring topics, that is general, embryo, histo and thorax.
and day 5 I used to give to the bit less important topics like abdomen, pelvis, perineum, and I used to revise the cadaver photos and the osteology. Both cadaver and osteology I used to do from YouTube. There is a channel of Dr. Ashwini, and you can see beautiful videos of cadaver and osteology there. Coming to the important topics, ये एक बहुत ही लंबी लिस्ट है बिकॉज एज आई सेड बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एनाटमी में. बट अब अगर आप ये लिस्ट कंप्लीट कर लेते हो यू विल कंप्लीट अराउंड 90% ऑफ द एनाटमी आई थिंक. एंड वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड यू कैन ऐड, नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड मैंने थोड़ा सा क्लियरली स्पेस दे के लिखा है तो द लिस्ट माइट बी लॉन्ग, डोंट वरी. Starting from neuroanatomy, these are the important topics. Head and neck, these are the important topics. Then upper limb, then lower limb, then thorax, pelvis, perineum, abdomen, general anatomy, embryology, histology, and these are the things you have to do from osteology, that is the attachments. So I guess this video helps you, and do not fear anatomy. I know बहुत ज़्यादा लंबी है and बहुत ज़्यादा time consuming है. Either you can follow the 5-day method, important topics से non-important topics तक, or you can, what I used to do when I used to get very bored was I just used to divide it into pages. So 10 pages per day read कर लेता था, and around 15 days के अंदर anatomy पूरी हो ही जाती थी. So you can do it as you like, but important topics को ज़रूर कर लेना. सिर्फ important topics भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, but don't leave this subject out of fear because it is very important. All the best, and as always doubts are welcome in the comment section. All the best and keep working hard. Thank you.